Okay, 3 people are watching. I Yeah, think it's Vishal. yeah, possibly. And I guess हम लोग आ चुके हैं स्ट्रीम पर. Everybody is here. टेक्निकल इश्यूज है गाइस, थोड़ा सा पहले से बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं टेक्निकल मेरे एंड से, मतलब मेरे ही एंड से प्रॉब्लम है. सो कीप मतलब बेयर विद अस, है ना. आज के स्ट्रीम के लिए माफ़ करिएगा. खैर, पहले देखते हैं कि इफ़ एनी पीपल आर कमिंग इन तो क्या है, थोड़ा सा और अच्छे से बात करते बनेगा. मितुल, अपना ऑन किया हुआ है क्या तू कैमरा? Yes, but it's not. Yes. या सो इट्स नॉट शोइंग, सो वेरी सॉरी. आई एम अपने व्यूअर से भी हम कह रहे हैं कि वेरी सॉरी, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. बट एटलीस्ट यू आर हियर टू लिसन आवर, यू नो, आप हमको देखने नहीं आए हैं, आप हमारी बातें सुनने आए हैं, तो आप बातों में फोकस करिए, हमको देख के वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा. खैर, सो इसी के साथ हम अपना एपिसोड नंबर 4 आज शुरू करते हैं. ये है हमारा ऑफसाइड टेक्स का एपिसोड नंबर 4 है. देखो, मैं इतना आई एम सो स्ट्रेस्ड राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस internet issues that I keep forgetting that what it is. So yeah, this is our Fanatics India नहीं यार, Offside Takes. Yes, it is our Offside Takes episode 4. और I've been joined by really good friends of mine, जिनका अभी आप फोटोज ऑब्वियसली फोटो में ही देख रहे हैं. श्रेया बस दिख रही होगी आपको completely अच्छे से. तो हेलो श्रेया. श्रेया जी, ये चेल्सी बाय से तुम्हारा. हाँ ठीक है, वॉट एवर. अब भाई, हम लोगों तू को बोला स्ट्रीम को बुलाया ही क्यों तू यार? बोला ना तुम दोनों ने बोला तो तुम लोगों का वॉइस आया, बट फिर ना श्रेया वो हो रहा है, तो बेयर विद अस, है ना. खैर, सो या गाइज, और हाँ, एज आई सेड, सिद्धांत ओसानी हमारे साथ है. ही इज नाउ अ रेगुलर, ऑल्दो ही स्टार्टेड अ tad bit late, but now he is a regular. And we have got मितुल गोस्वामी with us, and he is joining us from Noida. So मैं तो हमेशा ही ज्वाइन करता है, क्या स्पेसिफिक अभी बता आया कर. सर. सो अच्छा, चेंज हो रहा है बार-बार. ओके. क्या चेंज हो Fine. रहा है? नहीं, वो वीडियो इसका आ रहा है, एक का आ रहा है, एक वो का मैं नहीं आ रहा है, but that's fine. हाँ, वो मैं वही बात बोल रहा हूँ. आई कीप रिपीटिंग इट कि थोड़ा सा इश्यूज हैं टेक्निकल. प्लीज़ बेयर विद अस आज के एपिसोड के लिए. रियली सॉरी अगर आपको ये बॉदर कर रहा है तो, बट स्टिल वी आर ट्राइंग फॉर आवर एंड. ओके गाइज, सो आज हमारे पास क्या क्या डिस्कस करने के लिए, आज हमारे पास सही 7 टॉपिक है. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, कुछ नए नियम आए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े गेम हुए इस वीक. तो बहुत ही बड़े बड़े गेम हुए और मज़ेदार बड़े बड़े गेम हुए हैं. साथ में यू नो एफकॉन भी चल रहा है साथ में. तो एफकॉन जब भी आता है तो एफकॉन के साथ साथ यू ऑलवेज गेट कुछ मीम टाइप मटेरियल्स. एंड लेट्स सी कि आज हम वो वाला काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, टेक्निकल इश्यूज बहुत है करके, बट स्टिल विल स्टिल ट्राई. इफ अगर नहीं तो वील टॉक अबाउट एफकॉन, कि एफकॉन में चल क्या रहा है करके. सो या हमारी ये सब बात है. तो लेट्स बिगिन आवर पॉडकास्ट, है ना. बहुत देर हो गया. Talk about या the main topic. I think today, I wanted to discuss the new rule that FIFA is planning to come up with and probably testing it right now as we speak, which is the blue cards, which is something very new and exciting, and also not that great for us football fans. But these blue cards are now going to be introduced. Probably, I don't know when, but they're testing it
it's another extra card other than the yellows and the reds that you see regularly in football. So blue cards are ideally for any dissent or any cynical fouls if you make on the pitch or probably off the pitch, which could allow the player to leave the pitch for 10 whole minutes, which is again not a good, Bullshit. which is bullshit. So Yeah. Cut the this is the slack भाई. डायरेक्ट बोलो कि क्या है. राइट. बुलशिट इन माई ओपिनियन. बिकॉज ये हॉकी में होता है. बिकॉज आई एम अ हॉकी वॉचर एज वेल. तो थोड़ा बहुत पता है. ग्रीन कार्ड वहाँ पे बोलते हैं इसको. बस यहाँ पे उन्होंने सोचा कि वो होता ना दैट फेमस मी कि लाइक यू कैन कॉपी माई होमवर्क जस्ट डोंट थोड़ा लेट इट फैंसी लुक कर की दिया सेम हो. सिर्फ। थोड़ा चेंज कर दो. तो ब्लू कर देते हैं कि ग्रीन से ब्लू कर देते हैं क्योंकि ग्रीन तो कार्ड दिखेगा ही नहीं पिच पे. तो हमने सोचा yeah, कि चलो ब्लू कर देते हैं. बिकॉज मोस्टली क्लब्स वी आर ब्लू एंड ऑल दीज कलर. बट हाँ, आई थिंक इट्स वेरी बैड ऑफ अ थिंग. फीफा रिसेंटली और यूईफा या सारे एफएस मैं तो बोलता हूँ हैव बिन जस्ट मेकिंग अ जोक ऑफ देमसेल्फ. कि बार बार दे आर मेकिंग न्यू रूल्स जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. लाइक इट्स लाइक कि वो ईगो पे ले आए हैं कि उनको पता है कि हमारी कुछ भी बेइज्जती होती है तो कहते हैं नहीं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम नए रूल्स ले आते हैं. राइट. लाइक अब रेफरीज को बचाने के लिए दे आर डूइंग इट इवन मोर इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एजुकेटिंग द रेफरीज. इंस्टेड ऑफ yeah, एक्चुअली इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स दे हैव. फालतू में नए रूल्स ला रहे हो आप और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो. आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चीज़ें हैं. वार आज तक ऐसी फनी चीज़ है जो मतलब जोक बनता ही है हर जगह क्योंकि उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस है. फिर अब ये लोग नई चीज़ लाए सब्जेक्टिव कि सब्जेक्टिव करके इनके फाउल्स आ रहे हैं. तो अब सेम चीज़ यहाँ भी आएगी. अब ब्लू कार्ड में भी सब सब्जेक्टिव बोलेंगे कि व्हाट इज अ ब्लू कार्ड ऑफेंस फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट. कुछ कुछ केस में रेफरी नहीं देंगे तो वो बोलेंगे फिर सबकी व्हाई डिड यू नॉट गिव. तो कहेंगे नो ये सब्जेक्टिव नहीं था. एंड टू व्हाट एक्सटेंड यू थिंक कि डिसेंट है. कि मतलब अगर समवन yeah, इज हम्बली रिक्वेस्टिंग यू एंड स्टिल सेइंग सम बैड थिंग्स टू यू यू माइट नॉट गिव हिम अ कार्ड फॉर दैट. बट कोई गुस्से में बोलता है गुस्से में अच्छी बात भी बोल रहा है तब भी कार्ड दे देते हैं. राइट. दैट इज व्हाट yeah. हैपेंस इन द डिसेंट. तो ये भी एक तरह से सब्जेक्टिव चीज हो गई और इसके भी बहुत फ्लॉज हैं. लाइक वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट कि The 10 अगर minute. 10 मिनट या लाइक गोलकीपर को डिसेंड करता है देन व्हाट. 10 मिनट के विदाउट लिए आप गोलकीपर। जीरो को लाओगे क्या यार. जीरो को लगा दिया गोल पे कि चलो भाई गोल कीपिंग करो. फिर 10 मिनट बाद आ रहा है या फिर न्यू Yeah, कीपर लाओगे. it's very weird. Like, what are you going to या do? I think 10 minutes is too much to give a time in a time restricted game like football, करेक्ट. where you're already from this season we have started seeing key there are the amount of extra time that is increased in the half time and by full time. We are seeing around 7-8 minutes of half time extra time, and by the full time we are seeing around 10 minutes 11 minutes in a high scoring game विच इज ऑलरेडी देयर. तुम प्लेयर्स को एक तो बोल रहे हो कि तुम इतने मिनट और एक्स्ट्रा खेलो, इतने ही मैचेस खेलना पड़ेगा पूरे सीजन में, और उसके बाद तुम 10 मिनट बाहर भी रहो अगर ब्लू कार्ड एग्जैक्टली. मिला तो, या विच डजंट. लाइक वही यार. बट इट्स सो फनी टू थिंक कि लाइक फुटबॉल इज ऑलरेडी वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम इन माय ओपिनियन. कि उसमें आपको एक एक स्पॉट चीज के एग्जैक्टली इतने चीज के पैरामीटर्स हैं. इतने चीजें में आप कर सकते हो. बट नाउ यू आर मेकिंग इट इवन मोर लाइक वर्स आई वुड से. कि इफ यू ब्रिंग अ ब्लू कार्ड तो वो जो टीम है द टीम दैट इज नाउ 10 men दे विल बी जस्ट वेस्टिंग टाइम. दे कैन जस्ट फेक कि उनका एक प्लेयर इंजर्ड है. 5-6 मिनट नहीं कर या दिए. You just have like 4 minutes of playing बट फिर वो football एक्स्ट्रा जिसमें टाइम में जाएगा या नहीं जाएगा, दैट विल हैव दैट्स टू इट. सी. या लाइक वो ब्लू कार्ड में ऐड ऑन करेंगे या नहीं करेंगे. लाइक इट्स आई डोंट काफी थिंक दे विल ऐड. काफी ब्लर्ड लाइंस है उसके, क्योंकि मतलब लाइक यू सेड दैट उसको रेफरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया है, बट उसका बैकफायर भी हो सकता है और वो रेफरीज जितने क्रिटिसाइज हो रहे हैं और वो ज्यादा होंगे उससे क्रिटिसाइज उनके वो ब्लू करेक्ट. कार्ड के डिसीजन से। या आई दिस ऑल्सो इज. थिंक कि आई डोंट थिंक कि ये एक ऐसा मतलब रूल है जिससे पीपल विल स्टॉप डूइंग इट. मुझे ऐसा जनरली नहीं लगता कि आप अगर उनको डरा रहे हो. लाइक पीपल थिंक कि अगर आप रेड कार्ड और येलो कार्ड्स लाए दे थॉट कि फाउल्स रुकेंगे उससे. बट क्या फाउल्स रुक रहे हैं. लाइक इट्स नो. इंक्रीजिंग. इट्स स्टिल ऑन द या हाई. राइट. कि हो रहा है. तो आई डोंट थिंक सो कि ब्लू कार्ड की वजह से दे विल सी कि हाँ डिसेंट नहीं होगा. आई डोंट थिंक सो बिकॉज फुटबॉल इज अ वेरी आई वुड से वेर यू गिव एवरीथिंग इन द गेम. द बहुत वेरी टेंशन होता फिजिकल है. या इट्स इंटेंसिटी. ओवरवेलमिंग. समटाइम इट्स या ओवरवेलमिंग ऑन द पिच. एंड देन ऑफ कोर्स आपका रिएक्शंस निकलते हैं और आप डिसेंट हो जाता है. देन वार The चेक या होगा the क्या. वन only मोर थिंग. people I think the only या people happy with this would have been Sergio Ramos and Pepe, I think. वो cynical fouls करके अपना 10 मिनट बाहर बैठते थे और वापस आ जाते थे, वो या रेड कार्ड एक्चुअली खाते थे। No, दैट्स इट. nowadays we don't see as much as cynical fouls that there were before,
But even the small fouls and those dissents which you have with the refs, like putting a card for that all over again is just useless. You Matlab, have you're to just, you have to define cynical fouls. You can't keep it yeah. like an open term. For that Cynical foul also को उसके लिए भी 10-20 पेजेस तो निकालेंगे ये 0.1 0.1 0.5 कि cynical falls में ये करोगे तो तुम्हें blue card मिलेगा. Yeah, whatever, but it's still in the Yeah. testing phase. There's been a lot of backlash online also, as much as we are backlashing here. तो वन वही मोर है. थिंग जो मेरे दिमाग में जस्ट अभी आई कि वी हाँ, हैव वार में ऑफसाइड चेक्स होते हैं, फाउल चेक होता है, येलो एंड रेड कार्ड चेक्स भी होते हैं. सो आर दे या गोइंग टू इंक्लूड ब्लू येलो कार्ड नहीं चेक्स होते, आल्सो? येलो नहीं होते. सॉरी, रेड कार्ड होते हैं. तो हाँ, आर दे गोइंग टू चेक ब्लू कार्ड इज एग्जैक्ट, आल्सो आई थॉट ऑफ सस्पेंशन? दैट. या आई या थॉट ऑफ मतलब इमेजिन दैट. कि इस पे ना और दे गोइंग फॉर अ वार चेक कि उसने बोला क्या था या क्या किया उस पे था. भी टाइम वेस्ट या करो तुम. सो एग्जैक्टली. इंस्टेड आई थिंक एक मेरे को अभी इसका सॉल्यूशन और अभी समझ आया, लाइक नाउ इफ आई एम थिंकिंग अबाउट इट, कि इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन लाइक एयर द रिकॉर्डिंग या जो आई थिंक दे कन्वर्सेशन विल जो डू हो इट. रही है. नो नो, दे वोंट, अदरवाइज ब्लू कार्ड क्यों करेंगे? मतलब नहीं नहीं, they were बेसिकली talking about airing the recording of these नो, बट things. दैट माइट सॉल्व इट. आई विल टेल यू हाउ. हाँ, कि अगर मान लो एज अ प्लेयर कि मेरी अगर और एयर हो रही है, सोशल मीडिया पे जाएगी, प्लस आई कैन इजीली लाइक रेफरीज की एसोसिएशन कैन ऑल्सो स्यू द क्लब की आपका देखो बोर्ड मैनेजमेंट को भी इफेक्ट पड़ेगा, वो अपने प्लेयर्स को खुद डांटेंगे, फाइन वाइन लग सकता है. बट ब्लू कार्ड माइट नॉट स्टॉप इट, बट ये चीज स्टॉप कर सकती है अगर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, प्री रिकॉर्डेड स्टफ आपका ऑनलाइन जा रहा है, फैंस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे डल रहा है, बहुत बैकलैश मिलेगा एज अ क्लब और फाइन भी आप लगा सकते हो. बट इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अ कार्ड, दिस इज समथिंग दैट दे कैन डू कि एयर करते रहो. जैसे क्रिकेट में भी आपको दिखती है yeah, कि they रेफरीज show the वार third में क्या umpire's बात कर view. रहे हैं. Yeah. करेक्ट. तो ऐसे आपको भी बोलना चाहिए कि रेफरी से बात हो रही है तो उसके थोड़े थोड़े डालने चाहिए. I think, by the way, Sriharsh का तो views तो मिलने से रहा. So let's just move on to the big games that happened. First, we'll discuss the big games then. Yesterday was too much football for me, guys. I've watched a lot of football over the last 5-6 years now, but एक ही दिन में इतने भारी भारी matches, एंड two ऑल leagues वर्थ इट. having. Huh? Sorry? एंड ऑल वर्थ इट. Worth it, yeah, definitely worth it. Like yesterday, as you guys must be knowing, there were two leagues with both of the table toppers, 1 and 2, playing each other. One is, we'll start with Leverkusen versus Bayern, because we have to talk about how Leverkusen is bloody killing it in every damn game, and how Bayern just literally lost the plot, man. Literally lost the plot yesterday. एग्जैक्टली. लाइक व्हाट अ गेम. मतलब जितना हाइप था इसका, लाइक वट एवर बिल्डअप वॉज देयर कि जावी हैजंट लॉस्ट अ सिंगल गेम, it was truly worth it. And he outmatched every single tactics that Tuchel had. सारे players को, especially their midfield was absent, Yeah, literally absent. They were not able to play fine passes जैसे Leverkusen were playing, and they were brilliantly man marked. Goretzka was, I think in my opinion, was invisible on the pitch. उसके बाद Musiala, like yeah, Musiala is such a talented guy and he's doing nothing in the pitch. That nothing. means kudos to the opponents. उसके बाद आपके ऊपर मैगवायर फॉर श्योर वी हैव. उसके लिए तो आई थिंक यू बोथ कैन टॉक मोर, ऊपर मैकानो, एंड बिकॉज वी हैव सीन, Wait, वी बेयरली Upamecano सी. was in Bayern? Sorry, Barca? No, no, no. नो Not every bad नो, आई defender मीन is आई in वाज जस्ट Barca. सेइंग कि मैं ज्यादा यार प्लेयर्स की बेइज्जती नहीं करना चाहता. यू बोथ कैन डू. अच्छा. क्योंकि हम लोग जब भी साथ कभी बायर्न के कोई भी गेम्स देखें, देयर इज ओनली वन लॉर्ड जो हर बार हकता है, दैट इज उपमैकानो, राइट? लाइक वी बेयरली वॉच बायर्न की गेम्स, Seriously, yeah, बट true. व्हेनेवर वी डू वी जस्ट सी वन गाय नट में खा रहा है, ओन गोल मार रहा है, नाक पे लग रही है बॉल, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा स्टफ होता रहता है. German Maguire. नहीं, German नहीं, French Maguire. French Maguire. फ्रेंच मैगवायर. Yeah, I ऊपर mean, मैगवायर बोल लो ना, बेस्ट. Upamecano was literally the worst ever defender. I don't know how he gets a start for Bayern. And yesterday, like, just because like I had some soft spot for Tuchel, I was supporting Bayern. Otherwise, I wouldn't have been supporting Bayern, because Leverkusen are doing well. I don't care about Bundesliga as such. But yeah, of course, if you see some other team winning the Bundesliga other than Bayern, which is every year, you would like to support them as a neutral, right? But करेक्ट. फिर भी I was like looking forward to seeing Tuchel's men playing well. But नहीं, Bayer Leverkusen ने तो तोड़ दिया. That Grimaldo guy, Florian Wirtz, they are exceptional under They're killing it. Xabi Alonso, killing it. They're killing it. Like, I Heads think off. Bayern in the second half tried to get so many changes made
they got in Tell, they got in Kimmich, they got in Muller. Muller, yeah. Yeah, like these people who didn't start the game also, they got in all these people, but there was no point. Like, I think when did the goal start happening? In the second half. No, first half also they scored, right? And उसके First half बाद it was थोड़ा 1-0 2-0, or 2-0 it 2-0. was, I 2-0, guess. 2-0 in the 2-0. first half. Then it was cagey affair till the very end. फिर वो counter पे Frimpong, Oh beautiful man, funny goal. Frimpong's goal yesterday, guys. Whoever's listening, and you have to go and watch New Year. Like New Year came in the end, एकदम end में to try to score a header for Corner from corner. Bayern. But then on the counter, Frimpong just ran and New Year wasn't there at the post, and then bus goal. मतलब almost half line से थोड़ा आगे करके just goal. That was too good. And by the end of the time, I was like, screw Bayern, man. Leverkusen, chalo, goal maro. Yeah, and that is what going to happen अगर ब्लू कार्ड मिलता है कोई कीपर को तो ऐसी गोल पड़ने वाले हैं खाली गोल पे दूर से शॉट आएंगे because your referee sitting outside Yeah, for was 10 any minutes. over saying But something. मैंने भी एक आई थिंक इंटरव्यू बाद में टूकल का देखा था कि he played Sasha Boy, the new signing that they have, at Yeah. left back for Frimpong and Tella. मतलब वो इतने फास्ट थे वो विंग पे कि they had to put Sasha Boy there. क्योंकि जो लेफ्ट बैक आई थिंक डेविस इंजर्ड है ना, he's not No, playing or he Yeah, Davies. he's injured. Davies is injured. Oh. Alfonso Davies. So who played left अच्छा, back? I अच्छा, don't remember. अच्छा तो वो लोग साशा बॉय को स्टार्ट ही लेफ्ट बैक से किए. maybe, yeah. Oh, And guys, we need to talk about Harry Kane at Bayern. Like, what is you happening? can take Harry him out Kane. of you can take him out of Tottenham, but the Tottenham can't. Can't be Juventus. removed from And him. then another Spurs agent has joined him in this quest. That Yeah, is Eric Dyer. Eric Dyer. Eric Dyer. Eric Dyer. But one more thing, Tuchel के बारे में, like I think it's time. Like sooner or later होने वाला It's है उसके time, साथ. but the management has Yeah. said he is under no danger. But I Yeah, think by that's season surprising. end, yeah, we But were why talking would you about give a yesterday season how end he if you has want to? saved. Yeah, give up हाँ. अगर आप क्योंकि 5 पॉइंट की लीड हो गई है इसके बाद. But one Yeah. thing I was surprised कि Matthias de Ligt, who they bought last year, like as a signing from Juventus, he's fully fit and he didn't start and he didn't even come from the bench. तो this is something क्योंकि बहुत बार हो रहा है. माजरोई से भी थोड़ा सा अल्टरकेशन हुए हैं इसके थ्रू आउट द सीजन कि Yeah. उसको नहीं दे रहा था स्टार्ट. किमिक से हुए. तो थॉमस टुकल हैज दिस रेपो कि वो एक तो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ कोच है and quite you can say ki like of course on the screen he's like ki happy, kind, chill, but off the pitch, like when talking to team, he's very strict. He wants the best from the team, disciplined type of guy. But I think कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है that we are not able to see because these Yeah. players, like yesterday what Bayern played, I have never seen Bayern play like this. It didn't feel like Bayern, it felt like some other team. And So there's surprisingly, something. Bayern lost only 3 games, but now 4th. Yesterday was their 4th loss. Fourth They've loss. had 4 draws and rest all wins. Exactly, like they're not very bad, but these players, like जो उनके पास players हैं, it's world class. It's not like they are not Yeah. बेकार player. You have one of the Except best for some. strikers PL has produced in recent years. You have that. ठीक है, जिसको Lewandowski को they replace so finely with Harry Kane. I don't think any better replacement you can think of Lewandowski. But what is happening to all the other players? Nothing is Yeah, working for Muller them. had the same thing to say. Yeah. Like, we have to step up and what is happening. And Game, you have a 5 point difference from like Leverkusen to Bayern. So now you can actually see that Bayern might do it. Right. Yeah. Zabi is like cooking, man. Yes, Top notch, Yash, you man. were saying something. You were trying to say something. Yeah, I was just trying to say about that उस game because I also watched that game. बहुत कुछ देर तक देखे क्या बोलते हैं दी इंटर मिलान का गेम साथ में चल रहा था इंटर रोमा का. उसके बाद वही देखे. सी मतलब लोग बोलते हैं ना that being in Bayern Munich that is the easiest job. मतलब यार obviously that league अभी कुछ सालों से ही थोड़ी सी competitive हुई है. बट अभी रिसेंटली तो दे आर मतलब हम बोल भी नहीं सकते कैसे पिछले बार ब्लंडर किया डॉर्टमुंड ने और क्या हुआ एवरीबॉडी नोज. बट इवेंचुअली वो इतनी टफ लीग नहीं है. हाँ मतलब एंड बीइंग अ बायर्न म्यूनिक कोच और यू हैव सच अमेजिंग प्लेयर, अमेजिंग रॉ टैलेंट एज वेल इन योर टीम, इवन इन योर यूथ स्क्वाड. और बहुत उनकी अकेडमी बहुत शानदार रही है शुरू से.
तो it is expected to be one of the easiest job, but Thomas Tuchel has made it tough for himself. बहुत सारा सोच उनको लेकर लाया गया था वहाँ पर, बट राइट मतलब समझ से बाहर हो गया है टॉमस. मतलब ऐसा बोल सकते हैं, यू कैन हैव सिंपैथी फॉर Thomas Tuchel's firing at Chelsea. I still sympathize with that, but even the next job that you get and you are not able to stable the ships down there, and that too in that league, so ये थोड़ा सा अजीब लगता है अभी. राइट इवन आफ्टर अ ब्रेक केरला में Yeah, ब्रेक के बाद आए. extensive break ना. It's not like that you directly did your job. It's like आपने तुरंत को मिला, आपने कर लिया. ऐसा वाला ऐसा भी नहीं था वो. आपने समय लिया 4-5 महीना 6 महीना, and then you joined mid season last season. So yeah, क्लब भी आएगा ब्रेक, वो भी केरला ही आएगा शायद. केरला ही आएगा. हाँ. केरला में कुछ है शायद. केरला But में yeah, दे. let's move on to this thing. Roma versus Inter. Very rainy affair for Roma. Roma के tears भी डूब गए. When it rains it pours. Yeah, so sadly Roma lost. Yeah, like Roma had a pretty good chance. I think they have had great chances in the second half. Even though Inter has been killing it day and day out with all the games, they beat Juventus 1-0, but they managed to beat Roma 4-2. But also talking about Roma scoring 2 goals later, and then Boldanzi coming in later. But then again, like I have nothing to say about Lukaku, so I'm not even going to start. So you guys can discuss more on this game. I don't understand कि what is this guy even, कि एक प्लेयर में इतनी ज्यादा खामियां कैसे हो सकती है. मतलब कि लाइक होता है कि मैगवायर को भी इज बीटन इन की, मतलब मैगवायर भी इज प्रूविंग हिमसेल्फ, बट लुकाकू ही इज डूइंग द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन. पहले तो फर्स्ट गोल उसने असिस्ट किया, he flipped on the Yeah, idea to HRP and HRP which was was like कि यार offside. सर पे बॉल आई. Which was not Yeah, offside. Sorry. yeah. Which was not given as offside. And then one on one miss chance against Sommer. Horrible man. Voice आ रही है कहीं से मेरी. Is it my No. voice? It was Yeah. coming from Okay. Shreyas. I just muted him. Okay. Perfect. Yeah, तो वो भी है, but yeah, kudos to Roma, at least they gave a fight, because Yeah. अगर यही They टाइम did. शायद थोड़ा पहले हुआ होता तो I don't think so they would have even scored 2, and they True, almost true, scored true. like 2 more goals तो और They बनते. scored. Yeah. Yeah, like 4-4 in my opinion would have been a justified like scoreline, because they were playing really well, even though इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी. It was such a bad Roman night. You don't have to want to be there in the stadium. पूरा जगह almost flooding सा लग Pouring रहा था. like mad. Like I Yeah. feel like those raindrops can hit you and it can hurt you. Like it was that hard. That was हाँ वही. ऊपर से डेरोसी के आने से Roma has got a new energy, like a new soul in Yeah. them. They're playing very well. He even said कि every team is beatable, even Inter is. But yeah, like Inter is Inter at the end of the day. Currently, Inter is not. Dude, Sadly. Inter getting all those free agents and forming a different team, like after that, like selling players, then getting like players on free. Yeah, Like, look at that's those old guys. interesting. Like I don't even know if old guy calling them old guys is this thing. Who's that guy? I forgot his name. Chalanoglu and then Chalanoglu, Mkhitaryan, Mkhitaryan. then both are free agents. फिर HRB को लिया उन्होंने, इतना वो भी old है यार, कल गोल मारा यार उसने. Like they're playing Correct. very well and they have made a great team. I don't think so कि like it's their title to lose in Serie A this season. And Yeah. they're also going for, I think, Taremi and one more player, Yeah, I think. Taremi from Porto, Zelensky. man. He's like their top scorers. बहुत ही अच्छा Taremi, है. I remember from UCL. Zelensky, yeah, and Zelensky from Napoli is also coming. Somebody needs their negotiation or some powers, maybe. Free agents को उठाना उनसे कोई सीखना So, चाहिए. for that, we can give credit to the sporting director, Giuseppe Marotta. He was ex-Juve. तो Juventus में 2010 से I think 2015, 17, sorry 17, 18 तक he was there. And all the great players you have seen during that era. Pogba को हमने ही यूनाइटेड को इतने महंगे में बेचा था. और वापस भी दिया. वापस भी लिया. Right. उसके बाद Pirlo आया from Milan to here. So like these Yeah. remarkable signings he only made. So under small money budget. And now building Inter, like कहाँ Inter was like such a shambolic team, did not even going to UCL group stage के बाहर, but now they reached a final and this season also is looking super strong. They won a title, Super Copa, and I hope that UCL में they will easily go through quarter तो तक तो जा ही रहे हैं वो, क्योंकि they are playing very well.
quarter Yeah, semis. UCL is coming up. It'll be interesting. Roma is where on the table now? Eighth. Roma, if they would have won, they would have, I think, fourth. No, no, they're not Oh, eighth. They have gone oh, fifth, sixth now. या oh, nice, मोरिनो के nice. बाद से Oh, that's नाइन्थ good. से ये नाइन्थ से फोर्थ आ जाते हैं अगर कल के एज इट स्टैंड नाउ आई थिंक दे विल बी ऑन फिफ्थ और सिक्स्थ इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैवंट सीन द टेबल येट अच्छा, या टॉप that's टू में fine. रहते हैं ना अब हम नीचे के लोग देखते हाँ. नहीं टेबल पे अच्छा, अभी जब यूवेंटस अच्छा कर रहा है तभी ये आ रहा है। वही देखते हुए ऊपर देखता कितना गैप है और बंद कर देता हूँ लाइक नॉट भाई वाचिंग व्हाट इज चेल्सी फैंस को ऐसा मत बोलो, बहुत ऊपर दिखेंगे। But yeah, let's या talk about the other table toppers, Madrid and Girona, La Liga, coming डैम to La Liga. And I think a lot of Madrid fans had already said it yesterday, and since the last few days, ki Girona is going to attack them really a lot. And it's going करेक्ट to be a tough game for Real Madrid, and it's going to be a long night. This is what I've read, and you guys have also seen the same messages. But yeah, Real Madrid still beat Girona to pulp 4-0. 4-0 एग्जैक्ट सेम स्कोर लाइन जो फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट लेग में Yeah, थी उनकी and 4-0 Real 4-0 Madrid have a double over Girona. This was the second game, and they won easily. या मैन लाइक आई थिंक व्हाई दे वर सेइंग इट क्योंकि उनका मैड्रिड का जो बैक लाइन थी ऑल ऑफ द मेन प्लेयर्स वर इंजर्ड सो आई थॉट कि इसीलिए शायद पीपल आर लुक स्केप्टिकल बट मैन दे हैव But सम नेक्स्ट Vinicius, लेवल man, Vinicius, Jude Bellingham, Jude Vinicius. By the way, Bellingham Jude Bellingham is again injured, so या he's या out for Was some ओ weeks. Rudiger also got injured just before the match, right? If I'm not wrong. Yeah, Yes, yes. something, Like something no, happened. he was coming back. Like they thought कि he'll be fully fit, but they said कि he's still not fit क्योंकि अभी भी उसको कुछ issue है. So he might come like 1 or 2 weeks later. Maybe next game or next to next game. Oh my God, I was Sorry. also watching it. Goal! Oh, Oh, goal! Oh, good. But Yes. then please go. Nice, nice. Oh, Okay, by guys. the way, So guys. let's we are go. Yeah, also we are also watching Aston Villa versus Man United, and now it's 1-1. They have leveled finally we have an after Aston all the Villa 100 fan chances. We are in all the Aston house. Villa fans here, which is why my husband is missing on the stream, but he will come after the game is बुलाओ over. यार सिद्धांत versus विशाल होगा आज विला versus यूनाइटेड That नाइस was a नाइस tricky goal, man. कुछ भी चल रहा था. But anyway, yeah. Coming to Madrid, man. I don't know why Vinicius gets a lot of hate from people in Madrid only. यार racist बनना ही क्यों है अगर लोग तो गोल मार रहे हैं ना मतलब आदमी तो राइट गोल स्कोर कर रहा है तुम क्या मतलब रेसिस्ट बन रहे हो अपने प्लेयर के साथ fucking shameless dude like I feel no और mentality वो on even the Bangladeshi Rodrigo. yeah. Bangladeshi. What a goal, man. What a guy. Yeah, What he a looks like goal, what Bangladeshi, a man. goal. Like at the Rodrigo. Bangladeshi, yeah. Watching Real Madrid long ago, I never expected Rodrigo to be at that level. But now, Correct. throughout the years, he has shown that he has it. He can be that extra guy you need when no one is able to do it. Rodrigo can just run and score a beautiful goal. He can run through players and zigzag karke he just went through and got a goal. Like I don't even think Girona had much of a chance at all. Yeah, yeah. I didn't notice Exactly. Girona much, but yeah. Mentality monsters, Madrid. They've shown it again and again. Yeah. डॉन कार्लो Another पता नहीं क्या सिखाता है इनको यार ऐसा कि बोलता है भाई देखो It's मेरी तो just the eyebrow raise that he आईब्रो does, थी and क्या एक आवाज it's करेगा done. बस it's done. You know it's going to, you know. Yeah, but Dude, I one quality also. about Madrid is, yeah, you can go, Siddhant. No. You can go नहीं ahead. नहीं तो बोल दे बोल दो यार विला फैन को So पहले I कहते हैं saw like a video of like Vinicius ka the pass, the control to I don't know who it Jude. was, but that was a beautiful ब्यूटीफुल control. What a beautiful control by Vinicius. And या like you all said, Madrid are mentality monsters man. उनको लगा कि चलो जिरोना है मारेगा, but Madrid है यार. उनका अटैक उतना ही खतरनाक है अभी भी. वो मारेगा ही. one very underrated quality that they have, like people don't talk about it much, is they stay in the game till 90th minute. Like ये तो चलो game they won easily, but even when they are losing 1-0, they're just losing 1-0. It's not like कि 5-6 गोल ठोक खा लिए. They still are there. They're not out of focus. They'll stay there. They'll be Yeah. in the game and they'll wait for one chance and they'll score it. That is why we always say like late winners with them.
Yeah. Mithul, you're on mute. Were you saying Yeah, something? no, that Oh, is what I wanted to say about the game. हाँ. But yeah, kudos to Jude, man. Next level gravy. Drought था उसका. He didn't score Yeah. before this for a few games, and now he got injured. I think that is why. But he came back, scored two, and oh no, sorry, scored one. Yeah, two. I think two. Two Nee, two he goals, scored two one. He goals. scored one. No, he scored two, Vinicius no? scored two. Vinicius scored two. Bellingham one, and Rodrigo one. Okay, Please correct okay. me if No, I anything. was watching Roma Inter itna, so not हाँ. sure. These were few Siddhant of can the confirm, no? games. No, I, even I didn't see the Madrid game. Why will I see the Madrid game if I'm a Barca fan? Come on. but अच्छा तो बोला फिर भी बारसा No, fan. Yeah. rivals के लिए respect है, but इतना भी नहीं. Shreyash, anything you Bellingham. wanted to add? No, मतलब I didn't watch that game, but I got you guys, मतलब समझ रहा था कि क्या हो रहा था, मतलब पीछे, because we were watching But so Inter many Roma games. तो you did watch. Inter Roma watched it for a while, but then also I understood that see, watching any game means मैं पहले ही बोला था, I don't want Lukaku, man. I'm just pissed off that guy. I just don't want to watch anything that has Lukaku. You know, being a Chelsea fan, I'm over Lukaku in any game. I don't consider him as a living being. Yeah, he definitely is not. He's AI generated. Yeah. AI generated flop. AI generated flop. Yeah, well, and man always keeps getting flop, and still people are club like ours picked him up, and you know, बहुत उसको चने के झाड़ में बहुत जल्दी चढ़ा देते हैं अपन. Surprisingly, he's still a Chelsea, like linked to Chelsea. He's not left from. Linked क्या? He's still our He's player. still our player, Player, भाई. yeah. That's हाँ. what I'm saying. He's linked to Chelsea. अच्छा अच्छा. Linked, okay. I thought he's loaned, मतलब कुछ transfer links नहीं समझ में. Yeah. He's still Yeah, your but player. Shreyash, since you're talking, you continue with the games, with our game specifically. Yeah, our Chelsea game. Yeah. Oh my God, surprisingly. Oh, that ये तो मैं भूल ही गया था कि ये बात करनी भी है करके. Oh my God. वेडनेसडे की रात का टाइम था शायद. वेडनेसडे लगा था, फिर शायद थर्सडे लग गया था, ऐसा Yes, कुछ था. Wednesday night, हाँ, midnight. समथिंग. या वाह यार, इतनी बड़ी विंस को भी तारीख याद नहीं, रहती है आज की. क्यों नहीं रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई दैट केम आउट ऑफ द ब्लू. नोबडी एक्सपेक्ट्स अस टू बीट एस्टन विला, एंड इन फॉर्म एस्टन विला अपेरेंटली, है ना. एंड they are showing their form on, they are showing their form in the Premier League, as well as, you know, they know, and that too at their home, Via Park. Bhai, I didn't expect us. I too said even before the you know, match start होने के पहले, when we all connected over on Clubhouse, I just said कि भाई, if we get this through draw तक भी पहुंचा लिए ना, तो it will be बहुत हो जाएगा. I was amazed. This मतलब ना ऐसा है ना चेल्सी के साथ कि कौन सी चेल्सी खेलेगी किस दिन आकर, किस टाइप की टीम, ये फैंस भी नहीं जानते, है ना. हमें भी नहीं पता कि कौन सी चेल्सी आ रही है, क्या खेलने आ रही है, इनका क्या माइंडसेट से. आइडली यू सी कि यू नो, आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि एस्टन विला ने भी अच्छा नहीं खेला. वो उनका फॉल्ट तो था दैट दे डिडंट प्ले वेल. बट चेल्सी, क्योंकि कंसिडरिंग क्या क्या रिपोर्ट्स आ रही थी, एंजो वांट्स टू लीव, फलाना ढिमकाना, क्या नहीं चल रहा था मतलब मीडिया में, कि पीपल मतलब ट्रेनिंग में भी वो उतना दे आर नॉट शोइंग एंथुजियाज्म आफ्टर द वुल्व्स लॉस. बहुत नेगेटिव रिपोर्ट्स थी. एंड व्हेन यू स्नैच दैट विक्ट्री, it's always amazing to, you know, get such. Particularly, I was impressed. The goal that impressed the hell out of me, it was the Enzo Fernandez free kick. है ना. A lot of people in, you know, recently very much, you know, downplay किए कि अरे no, it was not even that great. What are you guys celebrating? This was not even a winning क्या बोलते हैं, penalty बोलता हूँ, free kick, है ना. ऐसा भी कुछ नहीं था. It's है ना. But come on guys, considering that was statement worthy in itself. वो हमको नहीं, देखिए वो टीम का मेंबर है. ही इज Enzo is a you know, committed team member. साल भर से he is putting in shift. Club form is पता नहीं कहाँ है, वो तो मोराल भी कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता. But that guy, and along with everybody, and I have my full sympathies with my players, क्योंकि कोचेज आते जाते रहते हैं ना. प्लेयर्स ऐसा नहीं होता कि एकदम फटाक से पूरी टीम चेंज हो जाए, ऐसा भी नहीं होता. प्लेयर्स रहते हैं और हम फैंस तो हैं ही हैं. सो ही इज पुटिंग इन शिफ्ट्स. हाँ, ज़रूर ठीक है,
Wolves की performance was definitely not up to the mark and possibly the worst performance of the season. हो सकता है और भी कोई कोई लिवरपूल भी गिन सकता है, बट मैं नहीं गिनूंगा बिकॉज लिवरपूल में तो वैसे भी वी वर एक्सपेक्टेड टू लूज अगेंस्ट क्लॉप और जो भी ऑड्स थे, बट वुल्व्स by Wolves at and at our home and then we lose 2-4. Sorry, not acceptable that loss was at any cost. But that The Aston type Villa of game. goals you conceded. हाँ, It's not like कि कोई pathetic. quality goals मारे हो. हाँ. Wolves ने तो बहुत बेकार गोल. बहुत मतलब It was like हाँ. सामने प्लेयर आपके कर रहे हैं कुछ भी ट्रिक और खा रहे हो गोल. खा रहे हैं वो बहुत Like out of focus हो गए थे वो तो. मतलब Like आउट ऑफ फोकस भी हो गए थे. प्लेयर्स वेयर उनका माइंडसेट भी पता नहीं कुछ खत्म ही हो गया था. मतलब वो परफॉर्मेंस देखकर बहुत बुरा लगा था उस दिन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट इवेंचुअली एज आई सेड, एस्टन विला गेम में आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैं तो सोचा था एस्टन विला हमारी लंका लगाएगी गंदे से, बट ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा थी. हमारे प्लेयर्स लोग राइट टाइम पे जब थोड़ा सा स्टेप अप करना था. मेरा तो वही कहना है, सी इस वीकेंड तो वी आर नॉट, हमको मतलब दुख दर्द पीड़ा नहीं हो रही है जो पिछले वीकेंड हुई थी. इस वीकेंड तो नहीं हो रही है. अभी शायद मंडे को गेम है अपना 13th को, है ना 13th या हाँ, जब भी मंडे नाइट गेम है तो तब क्या है, हम अभी तो खुश है. हम चाहते हैं कि लेट्स बिल्ड ऑन द फॉर्म. इट्स वर्सेस हाँ क्रिस्टल पैलेस या लंदन डर्बी, अगेन अ लंदन डर्बी, सो मेनी लंदन डर्बीज. सो हर किसी को वेस्ट का भी वेस्ट, साउथ वेस्ट, समथिंग सेंट्रल. So again, corporate derby. I'll quickly tell my thoughts though. I seriously did not expect Chelsea to do what they did, and I don't give a fuck about everyone. These people coming and getting rattled about Chelsea's goal and it being overshared. And just to all you haters, we had a lot of fun in our player का goal. हमें celebrate करना है, तुम अपना देखो, हम अपना देख लेंगे. I got really annoyed with all these reactions of people saying this. एकदम टाइम Not good. एकदम टाइमली आया ना गाइस, एकदम टाइमली आया ये, एकदम टाइमली आया ये ना ये जो वाला सीन. They might be watching our streams और करेंगे रुको भी बताता हूँ गाली तो दिलोगे तो जीप कटेगी. No, like Enzo's goal was fantastic because there were rumors about him leaving, so his whole reaction and everything was great for us, and for us it was empathetic. So I mean, not empathetic, sorry, it was I don't know, forgot the word, fuck it. So the goal was great, the match was great. Everyone was also talking about this is what happens when you do not play Sterling and Thiago Silva, because they've been a little bit here and there, and both the leaders, considering they are the eldest in the club and they are being played again and again in the team due to the leadership mentality. जब उन दोनों को नहीं खिलाए तो we did play well, and I was very concerned about again Cole Palmer being as a winger rather than a number 10, which wasn't working out earlier. But yeah, even if he didn't have a goal, it was great. And yeah, just to say, Aston Villa aren't good at home, so we can see it right now against Man United also. They're killing it again against teams when they play away from Aston Villa, but not at home. So at home there is an advantage for the other team to come in with. बहुत उल्टा टाइप का है ये, बहुत उल्टा चल रहा है इन लोगों का. हाँ, ये इनका उल्टा चल रहा है. So that is right. There. Also, with or without context, ठीक है, वो goal is a thing of an art. I've said this again. कि मतलब it was beautiful goal. I don't know why people say it's not a good goal. Free kicks are still, I don't know why people have started to कि हमने इतने देखी हैं कि Ward Prowse हो गया, then we have Ronaldo, we have Messi scoring. So people think कि it's just easy to score. It's never easy to score, especially against Emiliano Martinez, who had a cracker of a game थोड़ा while पहले, right? तो उसका गोल्स, उसके अगेंस्ट ऐसे गोल मारना एंड परफेक्टली टाइम्ड, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गोल. उसके बाद सेलिब्रेशन वगैरह जो भी किया दैट्स फाइन. लाइक पीपल माइट हैव अ से अबाउट इट कि अरे छोड़ देगा वगैरह वगैरह, बट द गोल वाज ब्रिलियंट. एंड एस्टन विला वाज हॉरिबल मैन, हॉरिबल. आज तो एटलीस्ट उससे थोड़ा सा बेटर खेल रहे हैं अगेंस्ट यूनाइटेड, बट दैट डे दे वर हॉरिबल. एनीथिंग टू से सिद्धांत, एस्टन विला फैन? I wish I wasn't wearing this on Wednesday. Like वो मेरे को लगा कि चलो ये लोग हरा देंगे तो इनको थोड़ा जले पे नमक छिड़कने के लिए एस्टन विला जर्सी पहन लेंगे. But then it turned out to be a ulta. So
ठीक है, अभी यूनाइटेड के सामने गोल मार दिया तो अच्छा, तो दूसरे यूनाइटेड फैन को हम फिर थोड़ा दुखी कर सकते हैं। तेरे आई कुड सी फ्रॉम योर रिएक्शन अबाउट दैट चांस। या ऑलमोस्ट दे ऑलमोस्ट स्कोर्ड यार, मुझे लगा मार देंगे। डियाबी था ना, लाइक इट वाज मूसा But डियाबी। yeah, if Villa does good this match, then me and Vishal will have a good talk. गुड इवनिंग हो हाँ जाएगा फिर, है? Yeah, just wait. I mean, there's still a lot of time for that. But didn't Barcelona play this weekend or No, last weekend? the last weekend, I think the They 3-1 won, win against no? Alaves. Yeah, I think we spoke about that Vitor Roque red card. Ah, right. So we have a game tonight, 1:30 a.m. IST. So next stream. Talking about 1:30 IST, we have another big game which we will not be able to talk about because there's no result yet. That is the AFCON final. So we'll just talk about it because we were planning to do a little bit of, discussing all the funny things that happened. But since we're having video issues today, we will definitely do it next weekend along with the results of who won. But we are having Nigeria versus Ivory Coast, the host of AFCON. So any Yeah. thoughts, spreads? Yes. Ivory Coast की खुद की एक journey is like something very, like amazing to talk about. They finished third in the group. They sacked their coach, sacked or resigned, whatever you want to say, because अभी भी still they're discussing about it कि क्या exactly हुआ. Then they started playing well and not even fully well कि 90 minutes में draw हो रहा है, penalties में winning the games and all, and now they have went somehow to finals. But I think it would be Nigeria's night. Like I am personally rooting for Nigeria because Yeah. of some Syria boys, like a lot of Syria boys are there playing. Also because they are the deserving ones, because they have came to this place uh, by winning their games, not just based on someone else result. Like Ivory Coast को qualify होने के लिए they were Yeah. waiting for others luck Correct. also कि third आए हैं तो हम कैसे हो. So I think this should be kept in mind कि उनको जीतना चाहिए. अपने बल But पे you आए never हैं know. ये. Yeah, and like people don't know, but Noida, Greater Noida, में a lot of Africans also live. So there are AFCON watch parties happening here around my house, and half of them are Yeah, Nigerian supporters. So they were a saying lot that of them they study ना NIU में पढ़ते हैं, शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, correct. वो सब में. या Yes, बहुत सारे. Like I was seeing today, like I went to play in the day, तो वहाँ पे आपको flags दिख रहे थे. They were like you went to the waving their Bennett University, isn't it? वो वहीं पे वो भी है yes, शायद, yes. isn't it? हाँ. करेक्ट. तो वहाँ पे वो लोग नाइजीरिया के पूरे फ्लैग्स लेके बैठे हुए थे ऑलरेडी. सो आई टॉक टू देम एंड दे वर सेइंग कि वी आर द ओनली प्रॉपर फुटबॉलिंग नेशन ऑफ अफ्रीका, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लेयर्स हु डोंट हैव टू डू सम करप्शन वगैरह वगैरह, जबकि उनके साथ हो चुका है ऐसा पहले. अब दे हैव डेवलप्ड ऑन इट. तो मतलब फुटबॉल के that हिसाब is- से समृद्ध हैं वो, मतलब कहने का मतलब है फुटबॉलिंग Yes. हिसाब से समृद्धि है उनके अंदर. या दैट्स राइट. Correct. So for me, it's Nigeria. I would want them to win 2-0. 2-0. I would want Nigeria to win 2-0 and lift the AFCON trophy. Osimhen is also there ना. Osimhen is also there Osimhen ना. is also there, guys. Lukman and Osimhen. yeah. They've got Lukman. good players in the team. They've got Yeah. like recognized players. Yeah, all good players they have. Like So playing on they are top. the better team considered to the मतलब the Ivory Coast, isn't it? They are the better Yeah. team obviously. Yeah. But Ivory Coast का तो थोड़ा सा वो है यार, Drogba. Drogba I know. from मुझे पता था कोई ना कोई तो बोलेगा कि उसके लिए करेंगे. The same logic you give for Tuchel Bayern वाला logic, तो यहाँ पे दे दो. No, but I'll be happy if Nigeria win. Like, nothing like I haven't followed. I know more players in Nigeria than Ivory Coast. Yeah. Right. That is when. So as neutrals it's a good game to watch. मतलब you'll get some good names out there. दोनों टीम के हिसाब से. It's a good game. Osani, anything that you have to add about on the AFCON finals? याया टूरे का कर्स रहेगा, वो आइवरी कोस्ट का ही प्लेयर है. कुछ अगर बोलते हैं तो भाई आइवरी कोस्ट मार देगा. Yeah. That's So, also Yeah, possible. But I think Nigeria is a stronger team than Ivory Coast. So yeah. Nigeria, I think I'm rooting for a Nigeria win. 2-0 Osimhen brace maybe. Oh, so you're all Osimhen ना, कि Osimhen ही मारेगा, Osimhen ही करेगा जो करना है. वो ट्रॉफी उठाएगा भी वही. हाँ, obviously. खैर. AFCON player of the year last year को हुई था. Yeah, that's also He right. might win it again इस बार, you never know. Yes. Yeah.
So also one more game that happened which we didn't, मतलब थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं because अपनी एशिया की बात है इसके लिए. So Yes, 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 एशिया yes, कप yes. फाइनल्स भी कल हो गया Yes. और कतर आर द AFC चैंपियंस apparently. So you know Not surprising. that's a big feat, but there are you know बहुत सारे red flags भी हैं उसमें. So वो चीज़ को भी ध्यान रखने का ज़रूरी है. Jordan, they showed good might, good spirit over. बहुत दूर से they traveled, मतलब Who would have thought? nobody thought, Yeah. man. Yeah, Qatar versus You Jordan would in have, final. one would have thought that South Korea, Iran, these are the teams. Japan, है ना? These are teams. Japan, आप yeah. Australia, Australia yeah, is there. because they also play here. So you always think कि these are either of these teams will go to the finals, है ना? Not at all, Jordan. Sorry. And even I didn't expect it Qatar as well. मैं कतर को भी नहीं समझ रहा था. वो Yeah. फिर वो कुछ हम लोग बात भी कर रहे थे ना कि बहुत सारे मैचों में मेहरबानी हुई है उन लोग के ऊपर, तो यहाँ तक पहुँच गए कुछ भी करके. So yeah, so Yeah, they that's are, why it yeah. looks like a very frisky business that has been happening with these countries, Like Qatar, both Saudi. continental cup में host nations final में पहुंचे यार. Yeah. हाँ, yeah, that's Yeah, also yeah. right. Africa. तो that means Euros इस बार जर्मनी में है, तो क्या जर्मनी में जा रही है? वो तो भाई वो तो नहीं होने वाला. I have given up Oh, on for Germany. fuck's sake. Oh my Goal. god. Oh Back my T. god. United scores? United scores? God. Yeah, 2-1. No 86 way. minutes. I cannot deal God. with this. This And is very still, bad. Why ये and बंदा- still, yeah. How this guy keeps scoring coming from bench भाई? वो वही बंदा- बोल रहा हूँ. And again he'll be you know वो फ्लेक्स थ्रो करेंगे उसके ऊपर कि he's a bad player, फना ढिमकाना. Dude, he's the modern age These Fellaini, fucking man. fans, bros, I'm telling you, these bloody fans who keep shitting on their own player day in and day out. He's a horrible player. Yeah. He does this, he doesn't do that, he doesn't do this, but then he wins you a crucial game at the last minute. Your middle fingers you can keep to yourself. This guy is showing me middle fingers across the room. This guy has scored it for you guys, but no thanks, no nothing. मतलब no, like people No just hate gratefulness. थोड़ी तो शर्म रखो मेरे दोस्त. Yes, he can be defensively bad. Like he can be defensively bad, but he scored a goal in the last minute when Aston Villa is trying their best to score and they're not able to. और फिर भी तुम उस पे ही गाली पकोगे. शर्म आनी चाहिए तुम Yeah, United fans को. I'm telling you, he's the modern age Fellaini. Yeah, Vishal Lord said ना Fellaini. कि he अगर fans don't McTominay आ रहा है, deserve that him, means plan Fans C या don't plan D deserve him. हमारा McTominay. तो plan C plan D just scored. Yeah, exactly. No, he can't defensively. That doesn't do anything. If a midfielder. वो वही, अरे श्रेया, बनाना चाहिए था. यार, श्रेया draw गैलेगर वाला होता है था, ये. draw गैलेगर वाला जो कुछ चेल्सी फैंस बोलते हैं ना कि गैलेगर तो does not add anything to the team, Same and thing. even I after, have the same thing to say. yeah, even after being the engine of the team in this such a shit all season. Without Gallagher, it is so hard to see the midfield do anything because Enzo and Caicedo plays more at the back. He will not. He's fucking Correct. slow. Yeah. He's not going to run forward. We don't have Jorginho anymore. So considered Gallagher being there, he is making the runs. He is doing everything that he can. फिर भी people want to shit on Gallagher. Same way people want to shit on McTominay. I don't give two fucks about McTominay. But then what irritates me is people talking their own fans saying कि नहीं वो तो कुछ करता नहीं है. Okay, I was going to say worse, but sorry. You know, you did said है ना, तो पहले You were कही दिया almost तुम there. आपने. You were almost there. I was almost there. Fuck it. Fuck this shit. So- Aston Villa shit. Aston Villa shit and Aston Villa are spiraling in form. कुछ Yeah. पिछले कुछ At मैचों home, से at home. and Why am I wearing this jersey? या निकाल दे. स्ट्रीम पे मत निकालना. मत निकाल दे. गलत उसके हो नीचे जाएगा. यूनाइटेड की रस्सी होगी उतारेंगे तो. Yeah. अरे भाई pro move. Aston Villa is still trying there. I think there will be a few 5-10 minutes more. How much time is left in मतलब 88 minutes are going on, but with extra time you can take 5 minutes. उसमें Aston Villa को उखाड़ नहीं पाएंगे. and it's at Aston Villa, isn't it? Yeah. भाई तो उखाड़ना चाहिए ना, मतलब ऐसा तो. Villa नहीं Park. होगा ना. नहीं Villa they're Park. actually shit at their home this Yeah, this that's season. what we are saying. No? I'm playing Hey, poor. Bhagwan. Away from home they're winning more Away points, from home, but at yeah. home they're losing points. Yeah. भाई उनाना ही है अब आखिरी उम्मीद, कुछ कर दे. Yeah, true. Never know. I'm waiting. I am waiting. Any backfield or something. And I don't know, all of a sudden my connection seems to be fine.
Now I can Yes, see it is everybody's fine. video. It feels so Yes. good. Oh my god. This happened because of Man United. No, I cannot. Yeah, United connection. You never know. Hey प्रभु. But yes, we're very sorry about the video. Yeah, loss very today. sorry guys. See, ये हम लोग ऐसे नहीं है मतलब, है ना. अभी हम लोग यहाँ पर Oh, हैं. he caught the ball. Oh Yeah, God, we why caught did he catch the ball? Who did? My captain क्या didn't do almost. anything. Fuck my life. उन्होंने सेव मारा है. अच्छा. Oh, your captain was Watkins Yeah, fucked. against United. कौन करता है? Okay, and not Haaland. You had Haaland, right? Should have captained Haaland. Okay. भाई हालैंड के बारे में भी बात कर लो यार. Back from injury. Ooh, Back goals. from and injury, brace. scoring goal. Nice. Brace. KDB Against man, Burnley? what an impact. Burnley. What an Everton. Everton. They play Well, Everton, yeah. It's you से think सबको because लगता है of कि Sean Dyche because you Sean Dyche you- से Burnley versus तो लिवरपूल था. They also won. Yeah, Darwin I Núñez mean is also Luton in versus form. Sheffield also we expected Luton के 4 goals मार रहे हैं इस बार भी मार they देगी भाई lost but 3-1. खा लिए. खा लिए 3 goal. आर्या पार का है उनका रास्ता. क्या तो रहेंगे या तो जाएंगे. कुछ तो करेंगे वो. Dude, and also like today's game, like just before this game, Arsenal beat the shit 6 out of minutes West added Ham. time. Oh my god, we have to talk about that, guys. Yeah, Arsenal 6-0 winning shit. 6-0. Yes. Arsenal West Ham Yes, How? yes, 6-0. yes. West Ham was shit today. Horrible. Yeah, the fans are leaving, Defenders. right? I think the Yeah, fans fans are leaving started after. leaving. 45 They were minutes and meme they were ki- out of the stadium. No, let Hey, Ozan. why are God they? was- Why are they leaving? Why are they leaving? Did, They were 4-0 4-0 by down. halftime. They were 4-0 down. अच्छा उनके मैच का बोल रहा. हाँ, फिर ठीक है, it was फिर at ठीक the है. London Ah. Stadium. मेरे को लगा इस मैच का बोल रहा है. मैं बोला अरे भाई अभी कौन छोड़ता है no. करके. नहीं. Yeah. But yeah, वो meme चल 6-0 रहा है. statement win. It's their biggest win in this season. Odegaard फोटो खींच रहा है और फैंस बाहर जा रहे हैं. ऐसा मीम बनाया हुआ There are है. already memes. There are already memes of that. Yeah, I saw that. Jamie Carragher, have anything to say, bro? Oh, guys, Haaland and Douglas Luiz are fighting. Sorry, Haaland- Højlund. Højlund. Sorry. Haaland. जाते येलो भी खा जाता. एक रेड भी होता तो अच्छा होता. Okay. Red for you, Sunny. And blue for Shears. Blue Yeah. card. Yeah, I'm playing. I'm wearing white, bro. There is nothing They are wearing white. City, man. P- Oh, PSG. Why Yeah. would you wear PSG, man? PFG. I would have asked you the same question last stream about Liverpool, man. Yeah, how did you wear Liverpool, man? How did you, man? उनको हरा दिया भाई. उनको हरा दिया इससे You बड़ी you क्या you कुछ cursed them. नहीं. Yes, I wanted that to happen. But चलो फिर Yeah. next stream we'll definitely Next do stream, AFCON yeah, अच्छे से and- करेंगे. But Very I sorry think- again. I Yeah. think we missed the game that we were about to discuss. Qatar का जो game था. Yeah, we discussed. Discuss. मैंने कर दिया. Miss So, किया. you have something to add specifically? I just Yeah. want to add that bloody magic वो जो उसने किया celebrate में. I don't remember the player, but he celebrated doing a card का magic trick. And Yeah. Ooh, cool. And I was like, He what scored a the hat heck? trick in the final. Penalty. अच्छा, that Qatar guy, na? That uh, Qatar guy. Penalty. Yeah. Yeah, he did this. That was a card magic trick he did. Yeah, you guys can. Bro. watch it. That is And I was cool, like, I man. was amazed. I was like, that's a good celebration, man. ब्रो Yeah, पक्का that is something पक्का. very thoughtful. सी ऐसे नहीं होता ना, मैजिक नहीं होता से पूरा मतलब स्क्रिप्टेड था गाइस. कुछ तो रीजन था, कुछ था, पूरा स्क्रिप्टेड था ये. जादू टोना. या पूरा टोना हुआ है उसमें, पूरा खेल हुआ है. खैर, so I guess should we wait for the United game to end or I No, think no. okay you are not okay. You don't want to see Vishal's You reaction. know, Yeah, वो पर्सनली रहे तो ज्यादा बेहतर है Yes. है ना, स्ट्रीम पे We'll मत है. connect after the game. या सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. रियली सॉरी कि हमारी जो स्ट्रीम थी आज बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे अपशब्द जो आप यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ यूज़ करिए. मेरे को नहीं बोल, हमको नहीं बकिएगा, हम तो यहाँ पे अपने टाइम से आ गए थे. जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उन वो साले Selfishness पागल. देख रहे हो. पहले अपना नाम बोल रहे थे कि मेरे को मत बकना. नहीं हमको मत बकना. सी तो जो तेरा है वो मेरा है ना ब्रो. ये तो मतलब पूरा ये तो हमारा हम सब का है ना मतलब. हाँ, सही बात है. मेरे घर के बाहर ही तो तूफान और बारिश आ गई. हाँ. क्या कर सकता हूँ, पता नहीं कोई पोल गिर गया होगा, उसके बाद भी कोई बंदा होगा जो रात को चढ़ के बना रहा होगा, तभी यू नो वी आर गेटिंग अ गुड स्ट्रीम राइट नाउ. बट खैर ये हमारा सीन था. 4th एपिसोड खराब रहा. आई होप अगला एपिसोड अच्छा रहेगा और अगले संडे आप आ जाइएगा. अभी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा.
अगले संडे डेफिनेटली नहीं मिलेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द ऑफसाइड टेक्स एंड हैव अ ग्रेट Please वीक. like, share, and subscribe. हाँ वो लाइक से तो मैं हमेशा ये शुरू में बोलना चाहिए था ना अपने को. एवरी टाइम सी मतलब इसका मतलब ये भी समझो गाइस कि हम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब के भूखे नहीं है. वे जस्ट मैं पिछले वीक भी वाली बात बोला था, मैं फिर भी वाली बात बोल रहा हूँ दैट वी आर नॉट भूकाज है ना. आई थिंक ये हमारा पैटर्न है कि तू भूल जाता है और ये वापस याद दिलाते हैं. अरे आज तो मैंने क्या क्या नहीं भूला ब्रो. आज तो आई वाज सो पिस्ड विद दिस कनेक्शन. आई फ्लफ्ड अप सो मेनी नेम्स. आई वाज नॉट इवन एबल. वो होता है ना ऐसे स्ट्रीमलाइन नहीं करते बना थॉट प्रोसेस को, क्या बोलना है क्या बोलना है क्या बोलना है. बट क्या थैंक यू वेरी मच. साइनिंग ऑफ दिस इज मी श्रेया शर्मा एंड अलोंगसाइड सिद्धांत, श्रेया एंड मितुल. विशाल इज नॉट देयर बट वो चिल्ला के ही मत बोलो, ज़्यादा बेहतर होगा, कोई सेंस नहीं. सो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. आई थॉट दे स्कोर्ड अनदर गोल. Okay. Yes. दिखा नहीं रहे आया. ठीक. बाय 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 बाय. संडे.